10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hello, ladies and gentlemen. I am Utkarsh Tandon, and I welcome you all once again to this interactive post-match analysis session. Another great day for Kings 11 Punjab, a thumping victory, and now they have 3 wins on the trot, and that too against the top 3 teams in the points table. That is Royal Challengers Bangalore number 3, Mumbai Indians number 2, and today they defeated the top team of the table, Delhi Capitals. Would say the way they've turned the tide around and in their favor, that is commendable. And now they'll be waiting for another challenge, and they are sitting at number 5 position after this win, and they'll surely look for a chance in the playoffs, as the table is now wide open. Talking about giving a brief description of the match that happened. First innings, Delhi Capitals power play score 53 for 1. Shikhar Dhawan on song, Prithvi Shaw again trying to hit a little bit hard and exploit the power play, but he couldn't. Shikhar Dhawan, only standout performer for Delhi Capitals. He made 106, unbeaten 106 of just 61 deliveries. First player in the history of IPL to score 2 consecutive hundreds. First player, mind you, first player in the history of IPL, means it's the 13th season, and Shikhar Dhawan is the first player to score 2 consecutive hundreds. Before this match, he scored against CSK. That was his maiden IPL 100, and it is said that one brings two. And here is the second one for the Shikhar Dhawan. Apart from that, a very disappointing batting performance from Delhi Capitals. They scored, or rather they finished at 164 for 5. 164 for 5, out of which 106 were made by Shikhar Dhawan. So 164 was not a good total in considering that 106 of those were scored by Shikhar Dhawan. So apart from that, all the other batters scored 58 runs of just 59 deliveries, means not even run a ball. Then Kings 11. Kings 11 in reply had a poor start. As they lost their 3 wickets. Their top 3 in the power play at the score of 57. In the 5th over, Chris Gale took or rather looted Tushar Deshpande and scored 26 runs of his over, where Tushar Deshpande continuously kept on bowling shot. But it was the 6th over which was the eventful over, where Ashwin got Chris Gale out clean bowled, and after that a poor running call by Nicholas Puran, which eventually got Mayank Agarwal run out, an unfortunate run out. After that, it was Nicholas Puran who wanted to fulfill the runs of Mayank Agarwal as he got him run out. So Nicholas Puran played a good innings of 53 of just 28 deliveries, and then it was Maxwell again. Maxwell was amongst runs. He made 32 of 24 deliveries, but again got out playing a very rash shot, which wasn't the need of the hour. On the previous ball, he got a 4 of Rabada. Knowing that it was the last over of Rabada, he should have actually took off that over and went on to hit 2 other bowlers, but he again couldn't finish the game. But at last, KXIP won it in 19 overs of the last hit by Jimmy Neesham. For Delhi Capitals, it was Ravichandran Ashwin, Akshar Patel and Rabada who had same figures except for the wickets. Ashwin 1 for 27 in his 4 overs. Akshar Patel 1 for 27 in his 4 overs. Rabada 2 for 27 in his 4 overs. So this was the match summary. Now I like to add fans. So first one, here I have Anurag. Here I can see Nitesh. I can see Prabodh and Nagarjan S. So hello and welcome everybody. A warm welcome. And you're live in the show.
And just to remind the viewers, today I've just received, means prior 5 minutes prior, I've received a text from Paji that today he'll not be able to join. I'm really, really sorry on his part and for any inconvenience, because he's still somewhere out, so he's busy today and he'll not be able to join today. So I'm very sorry on his part. Okay, no issues. Yeah. So Anurag, and then Nitish ji, then Nagarjan, Prabodh. So for in this sequence we'll go. Yes, Utkarsh, thank you. I just saw the scorecard and all the scores and the bowling analysis of various players who were part of the match tonight actually. So I saw Shikhar Dhawan is scoring a century, and then Kings 11 Punjab just robbing the match. So I think somewhere around we can say now that even in a shorter format of the game, it's the team. If the team plays well, even small contributions matter. So today we saw that, and it really helped the team of Punjab clinch this game. So, but really, Agree. if we talk on the whole about what how does this game helps the Indian team, I think it's good to see Shikhar Dhawan score really well. I'm personally happy that this should really boost Shikhar Dhawan in the for the upcoming India games as well. Agreed. And along with Shikhar Dhawan, I like to mention Mohammad Shami. 4 overs, 28 runs, 2 wicket, thumbs up. I would like to mention Ashwin. I like to mention Akshar Patel. So for the Indian contingent, I would say a very, very good game. Okay. So now I'll move to Nitesh ji. Hello, Nitesh ji. You're live in the Hello, show. Utkarsh. Go ahead. Hello, Utkarsh. Hello, Anurag. Hello, Nagarajan जी. Hello, प्रमोद जी. मेरा पहला तो सवाल यही है कि पृथ्वी शॉ को और कितना समय लगेगा मैच्योर होने में. या बहुत बढ़िया टैलेंट है, बहुत बढ़िया प्लेयर है, पर शुरुआत भी अच्छी की थी उन्होंने. 3 हाफ सेंचुरीज लगाई थी, पर अभी भी सिर्फ 200 रन ही बना पाए हैं 9 मैचेस. तो और क्योंकि वो इंडिया उसमें अपना फ्यूचर ओपनर के रूप में उन्हें देखते हैं. वीरेंद्र सहवाग की कॉपी बुक स्टाइल कहा जाता है उन्हें. तो वही उत्कर्ष जी, आपसे यही सवाल है कि कितना समय और लगेगा उनको मैच्योर होने में. देखिए, वही बात है जो हम संजू सैमसन के लिए करते हैं. मैं कंपेयर नहीं करूंगा, बट एक 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 एस्पेक्ट होता है गेम का, कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी आपको चाहिए. You need consistency if you want to play for India, because आज के जमाने में अभी प्रेजेंट इंडियन टीम को देखें, सो देयर इज अ कट थ्रोट कंपटीशन. अगर आप सिर्फ ओपनिंग की मुझसे बात करें तो यू हैव शुभमन गिल, यू हैव अ गाय लाइक शिखर धवन वेटिंग. मतलब शिखर धवन who's scored 200s on the trot, first player in the IPL to score successive hundreds. So you've guys like Shubman Gill, Prithvi Shaw, then you have Rohit and Rahul already opening the innings for you. You have someone like a Sanju Samson who is there in the competition. So कट थ्रोट कंपटीशन है, और ये कंसिस्टेंसी उनको लानी होगी. और एक बार मैंने पहले भी आपसे ये बात कही थी, शायद पता नहीं याद है कि नहीं, कि पृथ्वी शॉ के गेम में वो 2 फ्लॉज साफ नजर आते हैं. एक तो शॉर्ट बॉल बॉडी में, बिल्कुल. सीधी बाउंसर अच्छी हाइट पे बॉडी में डालिए, ही गेट्स क्रैम्प्ड. दूसरी चीज, पैर नहीं चलता शुरुआत में, तो इन स्विंग पे तो बिल्कुल ही वल्नरेबल है. आउट स्विंग पे भी अगर बाहर जा रही है तो दूर से खेल जाते हैं. सो ये दो तो एकदम पक्के पक्के फ्लॉज हैं जो दिख रहे हैं. एंड ही हैजंट बीन एबल टू इम्प्रूव. वो इम्प्रूवमेंट की हम बात करते हैं, मगर वो अब तक आई नहीं है. सो जैसा कि आपने कहा कितने और चांसेस, सो आई थिंक कि अब यहां से शायद अगर एक आध मैच और देगी दिल्ली, बिकॉज अभी तक दिल्ली एक सॉलिड पोजीशन पे है. तो अगर टीम जीत रही होती है तो वो चेंजेस करती नहीं है उतना. वाई डू फिक्स व्हेन नथिंग इज ब्रोकन. बट अगर यहां से एक आध मैच और हारी और वो पृथ्वी शॉ के फॉर्म के साथ कोइंसाइड कर गया, so I'm sure you will see a change in the opening pair, means a replacement for
पृथ्वी शॉ। जी। हाँ जी। So next I have Prabodh जी, जी, गुड you're इवनिंग। you're joining us for the first time, तो पहले तो आपसे कहूंगा कि या सब्सक्राइब कर दे चैनल एंड गो अहेड। ओके, श्योर श्योर श्योर, एंड थैंक्स फॉर मेरे को यहाँ पे इंक्लूड करने के लिए। और मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ये था कि आज का जो स्कोर बना है इसका, आपके टीम का, दिल्ली की टीम का, और दिल्ली की टीम में जो मेजर कंट्रीब्यूशन था दैट इज सिंगल हैंडेड शिखर धवन। हाँ शिखर धवन ने 107 108 बनाया, उसके अलावा कोई भी बंदा 20 पे नहीं गया। तो एक ये काफी, आई थिंक 20-25 रन वो शॉर्ट रह गए इसके कारण। कोई भी बंदा कंटिन्यूटी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया, उनके साथ स्टेबल नहीं हो पाए। इवन तो जो अच्छे अच्छे प्लेयर थे उनका भी स्ट्राइक रेट दैट वाज बिलो 70, दैट इज पृथ्वी शॉ और यू कैन से स्टोइनिस और अदर वंस। तो वहां से भी कंट्रीब्यूशन की इनको कंटिन्यूटी और सपोर्ट की जरूरत है। जो हेटमायर ने थोड़ा बहुत खेला बट उनके पास ज्यादा बॉल बची नहीं थी उस समय। तो इस पे क्या इम्प्रूवमेंट और उनकी टीम एक्सपेक्ट कर सकती है? हालांकि दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप और टीम बहुत अच्छी कर रही है, हम्म, तो इसमें हाँ और क्या तो इम्प्रूवमेंट के चांसेस आ सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ आपसे सर कि इम्प्रूवमेंट हो सकता है। और आज मैंने इंट्रो में यही कहा कि दिल्ली कैपिटल्स के लिए 106 रन 164 में 106 बनाए शिखर धवन ने, बाकी बैटर्स ने 58 बनाए, 58 ऑफ 59 डिलीवरीज, मतलब रन बॉल भी नहीं थे। 58 ऑफ या 59 डिलीवरीज। अगर मैं थोड़ा सा कंपैरिजन स्टेटिस्टिकली बता पाऊं तो मिडिल ओवर्स में, जो कि 9 से 15 ओवर्स होते हैं, वहां पे दिल्ली का स्कोर था, दिल्ली ने बनाए उसमें 64 रन, 64 2 विकेट के नुकसान पे। और किंग्स 11 ने उसी मिडिल ओवर्स में बनाए 84, 84 1 विकेट के नुकसान पे। सो देखिए 20 रन का डिफरेंस, अगर यहां से 20 रन और जोड़ते तो 184 वुड हैव बीन अ वेरी गुड टोटल। 184 एक बहुत अच्छा टोटल होता, और शायद वो 20 रन का ही डिफरेंस आया है। आप देखें आखिरी में पंजाब को चोक कर लिया था। मैं आपको जरा यस सा यस अगर यस बताऊं तो आफ्टर 12 ओवर्स पंजाब 120 पे एक था, और पंजाब ने गेम जीता है 19वें ओवर में आके, 19 19 ओवर ओवर के पे। बाद। सो in the 7 overs Punjab scored just 47 runs। इन 47 दैट रन केस अगर मतलब 10 रन भी और एक्स्ट्रा होते तो उसका उसका जी तो इनके काफी अच्छे चांसेस बन जाते, इवन 10 रन प्लस और होते दिल्ली आज। हाँ, यही मैं कह रहा हूं कि अगर वहां से 10 15 20 रन होते तो दिल्ली के पास चांसेस थे। बट या इस बार दिल्ली ने अपने बॉलर्स को वो रन ही नहीं प्रोवाइड किया। और कंसीडरिंग, एडिंग टू इट, कंसीडरिंग आपका जो टॉप बॉलर है, वन ऑफ योर टॉप बॉलर्स एंड्रिक नोकिया, उसको आपने रेस्ट कराया है। जब आप एक टॉप बॉलर को रेस्ट कराते हो और एक ऐसे बॉलर को खिलाते हो जो अपना पहला टूर्नामेंट खेल रहा है, तो आपको एक कुशन लेके चलना पड़ता है एक्स्ट्रा 10-15 रन का। वो कुशन आज, कुशन क्या, वो तो उन्होंने जो रन चाहिए थे वही नहीं बनाए, कुशन तो भूल जाइए। सो जी, वेरी डिसअपॉइंटेड बाय दिल्ली कैपिटल्स बैटिंग। आपने सही कहा, बिल्कुल अग्रीड। इसमें एक छोटा सा पॉइंट और था उत्कर्ष जी मेरा, कि जो नॉर्के के जगह आज लिया था शम्स को, इन्होंने, शम्स ने पहला ओवर काफी अच्छा डाला था डिस्पाइट ऑफ दैट, यानी अनफॉर्चुनेट नो बॉल उनकी थी। उसके अलावा केवल 1 रन पहले ओवर में कंसीड किए थे, जो फ्री हिट का हाँ, 6 था और एक एक्स्ट्रा नो बॉल पे गया। तो हम्म, जिस हिसाब से बॉल को मूव कर रहे थे दैट वाज गोइंग वेरी नाइस, तो एक ओवर और वहां पे कंटिन्यू करा सकते थे आई थिंक इन दैट केस श्रेयस से। बिल्कुल। और जैसे ही अक्षर पटेल ने विकेट जरूर लिया, बट जैसे ही अक्षर पटेल आए, मैं टीवी के बाहर मैं तुरंत चिल्लाया, व्हाई नॉट सैम्स। बिकॉज डैनियल यस सैम्स को मैंने भी देखा है, फॉलो किया है। पहली चीज तो लेफ्ट आर्म है डैनियल सैम्स, और अच्छे बॉलर हैं, ऐसा नहीं है कि खराब बॉलर है। डैनियल सैम्स इज अ गुड बॉलर। और पिच, अगर किसी ने पिच देखी होगी टॉस टॉस के वक्त या टॉस के पहले, तो पिच पे घास थी, और घास की वजह से बॉल मूव कर रही थी पहले इनिंग्स में। और अंडर लाइट्स हमेशा याद रखिए बॉल मूव करती है। सेकेंड इनिंग्स में अंडर लाइट्स बॉल मूव करती है स्टार्टिंग के ओवर, तो वहां पे थोड़ा और एक्सप्लॉइट कर सकते थे। बट वहां पे अक्षर पटेल ने ले लिया विकेट, तो किसी ने ज्यादा बात नहीं की उसकी। मगर हाँ, ये एक बहुत जी अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपका, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन, आई एग्री। So now moving to Rohan. Hello Rohan, a warm welcome. Hi.
Thanks. All right. Yesterday I wasn't able to join. Sorry for that. And No, what do you believe? What are the chances Punjab qualify this year in top four or not? means they are they've turned the David into Goliaths, and their chances are wide open now. Means the points table is wide open now. Yes, they do have their chances of qualifying the playoffs. I agree. Or they still have I think 4 games left, if I'm not wrong. Yeah, four Four games are games still left, and and the problem which they were facing earlier that their middle order wasn't firing. Today we saw Maxwell scoring 32 runs, and that's a good sign for them for the later stage. yes, definitely. He couldn't finish the game, played a rash shot, but he's amongst the runs now, तो उससे थोड़ा confidence जरूर boost होगा. And see, more than that, what these 3 wins will do for Punjab, they will actually boost the morale of Punjab, because the teams which they have defeated are not the bottom feeders. They are the top three: RCB, Mumbai Indians, Delhi Capitals, three of the strongest in this IPL. So definitely they have their chances. They are now on the fifth spot in the points table, and 4 wins. So 8 points, 8 and 8, 16. So definitely their chances are really good, and I think their net run rate is also now in negative only, but it's quite good. So if they win Yeah, it's their good. next 4 games, if they win their next 4 games, uh, convincingly, then I think they have a good chance of qualifying. I believe they won't. There are very bleak chances that they might win all four matches. They'll go. Yeah. They'll either win two or three matches, and then the fight will be about the net run rate. So they should score. They should bat first, as batting is one of their strong point, as Mayank Agarwal and KL Rahul can fire up the order, and then they have Chris Gale and Maxwell coming down. So they can do one thing. They can choose to bat first, and they can fire all their guns, and then they can stop the other opposite side to chase that total which they set up. I believe this should be their strategy if they Agreed. want to qualify. Agreed. See, today it was a different wicket on which they were playing, so it was a bit better for batting, because it had some grass which actually which was a duplicate, or rather which was just an artificial one just to bind the wicket. So it was a different wicket today, and they batted quite well. In the second innings it was going good. It had some extra carry and bounce as well, but looking at what the wickets have been, considering the wear and tear on the wickets, I think they can really bat first and then put up a good total, which they can defend, because they have good bowlers as well. Uh, See, Yeah. Shami went for runs in last couple of games, but this doesn't mean that he's not a quality bowler. Today he came back 28 runs in 4 overs, picking up couple of wickets. So Shami is a good bowler, and adding to that, Maxwell chipping in is a very good sign for Kings 11 Punjab. In last game also, he bowled all his 4 overs. Today also, he bowled 4 overs, giving 31 runs and picking up a wicket as well. So Maxwell chipping in and bowling to right-handers, it is a very good sign for Kings 11 going forward. Yeah. No doubt for Shami. Actually, we all know that what happened in the super over in the last match. So I have all my money on Shami that he'll be one of the top wicket takers in this season. When the season gets ended, he'll be in the top list of wicket takers, I believe. Yeah, agreed. I think he has 16 wickets to his name already. Yeah, So, yeah. so next we have Nagarjan Ji, Nagarjan S. Welcome, sir. Yes, Go sure. ahead. Yes, Utkarsh. I slightly differ the view with Prabodh sir and Nitish sir and what we were discussing that Delhi were lacking in Hello. Yeah, I think there's some technical issue. No worries, we'll sort it out. Uh,
So in the meantime, I'll move to. So Anurag is not Can there. you hear me? Yeah. Now you're audible. What I'm saying is that the score was par, but they don't have Nokia this time with Delhi. That was a big disadvantage for them. And moreover, their fielding was very sloppy today. Even they had a missed chance of Nicholas Puran, which Pant easily could have made him run out with this mix up again with Maxwell. So these are the, and there was a, in the end also there was a catch given by Deepak Koda which was missed by Stonis. So there were some flaws with the fielding due to the stadium. Also, we see a lot of catches going down in the stadium. So I don't feel Delhi don't have enough score on the board, but I felt that the captaincy of Iyer become little bit overconfident, or what to say. It take the game little bit lethargically. He didn't make the close players or attack the batting team to avoid the easy singles. Even at the time, many times we saw Kings 11 in this season also they have choked many times. Even out of 30 out of 30 run a ball they couldn't even to score. But Delhi somehow missed the trick due to Nokia's not availability. On the other hand, Rahul's captaincy was very intelligent and very. It is very happy to see him as a growing captain in this season. He pushed Maxwell for the fourth over and took the Rishabh Pant's wicket. That was a brilliant move, which no one expected at the time to bowl Maxwell with two left-handers. He took a gamble and that paid off. It that was a good captaincy, but still feel my heart out for Jordan, who was missed this match, who bowled a better over in the super over last match. But keeping him away was not a good choice in my view. So, how would you rate both the captains, uh, IS and Rahul's captaincy? That what I know from you. See, I beg to differ you on the first point that you said DC were not DC put a par score. See, actually that wasn't a par score considering your leaving aside Shikhar Dhawan and your other batters scoring 58, just 58 runs of 59 deliveries. It is T20 boss, and you're not scoring run a ball as well. So in the middle overs, you are 64 for two, and you always criticize CSK for playing slow in the middle overs. So if there is a criticism for one team, so there needs to be criticism for every team. You need to be neutral. DC scored 64 in the middle overs and actually got two breakthroughs as well. So 64 for 2 was the score of Delhi Capitals in the middle over. And as you mentioned, your first question, again, a smart move by by KL Rahul to bring in Maxwell, and he has been doing it for the last couple of games now. Also, as you mentioned about Shreyas Iyer, that fielding, see, fieldings and dropping catches, these are part of the games. You can't blame fielding for losing, means you can't cover up your batting issues with your fielding. See, that was a difference. That was a crucial point. That was a you can say a crucial stage of the match where had Puran been run out, he wouldn't have scored 53 runs. But you cannot cover up your batting, sir. I beg to differ on this. You cannot cover up your batting having scored 58 of just 59 deliveries. And although you're not all out, you had 5 wickets in hand, so you would have been more attacking, and only attacking cricket was displayed by Shikhar Dhawan, playing at a strike rate of 173. Again, there have been a few mistakes from Iyer, miscalculation from Iyer, because at last you didn't had the over of Rabada. Rabada bowled the 18th over, I guess, which was his last over. 18th or 17th over, which 70. was his 17. 17th over, which was his last over. Maybe when Ashwin was on song and was bowling really good, at that time you wouldn't have removed Ashwin.
and you would have bowled Ashwin and brought Rabada afterwards. So that was a bit of miscalculation. Then in the power play also, when you brought Tushar Deshpande there, you could have brought Rabada as well, and had Rabada picked Chris Gayle. So that over of 26 runs, that was also a difference. Yeah, but in Nokia was the difference. What I feel, Nokia was not there. That was also a big difference. Definitely. Uh, Definitely, that was a difference. And I initial stages of the show that considering that you are resting Andrik Nokia, one of your top bowlers, you needed that cushion. You needed that extra cushion of 10 to 15 runs, because you can't expect so much out of a Daniel Sams who was playing his first game of the IPL. See, Lockie Ferguson came in and took 3 wickets in his first game. That's a different story. But you can't expect Daniel Sams to come in and perform the same way as Andrik Nokia was doing for you. So that was a difference, no doubt about that. yes. Yeah. So I think Nitesh ji isn't there. So I'll take one more comment from you. I'll move to Prabodh ji. एक्चुअली मेरा एक कमेंट ये भी था उत्कर्ष जी की, जो एक ट्रेंड सा बन गया है इस बार इवेंट में, मैं देख रहा हूँ आईपीएल में, द शफलिंग ऑफ द बॉलर्स अननेसेसरी। काफी गलत जगह पे, बहुत जगह मैंने देखा है पूरे टूर्नामेंट पे, कोई बॉलर अच्छा कर रहा हो, इवन अगर 140 प्लस के जो पेसर्स बॉल करते हैं तो उनको एक वार्म अप ओवर चाहिए होता है, एटलीस्ट दे नीड 4-6 बॉल्स टू गेट इन द रिदम। तो अब अगर रबाडा, आर्चर या बुमराह लेवल के बॉलर्स एक ओवर करा के हटाएं, उसके बाद गैप करके 4 ओवर बाद फिर लाते हैं और एक्सपेक्ट करें कि दे विल डिलीवर, तो बेटर है कि जो धोनी का एक पैटर्न है, जैसे वो जैसे चहर से अगर बॉलिंग कराते अच्छी कर रहे हैं तो 2-3-4 ओवर भी करा देते हैं। तो उस टाइप का पैटर्न कोई कैप्टन उसके अलावा मुझे अडॉप्ट अग्रीड करते नहीं दिख रहा है। मैं एग्री करता हूँ, और इसमें मैं रोहित शर्मा की तारीफ करूंगा। रोहित शर्मा की अगर आपने कप्तानी देखी होगी, उनका बहुत सेट पैटर्न है कि बहुत फ्लेक्सिबल कैप्टन है एक्चुअली। अगर मैं कहूँ तो रिजिडिटी नहीं है। सिर्फ बाकी कैप्टन रहते हैं थोड़े से रिजिड होते हैं कि मुझे इसी को कराना है तो इसी को कराना है। वो थोड़े से फ्लेक्सिबल हैं। आपने स्टार्ट में देखा होगा, जसप्रीत बुमराह आते थे, मे बी आखिरी ओवर पावर प्ले का डालते थे, मगर पिछले मैं कहूंगा 3 से 4 गेमों में देखें, जब वहां ऊपर से ट्रेंट बोल्ट विकेट आपको दे देते थे, तो जसप्रीत बुमराह डायरेक्टली स्ट्रेट अवे सेकेंड ओवर में, थर्ड ओवर में आ जाते थे। तो वो एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कैप्टन के पास। और जैसे कि आपने कहा शफलिंग, अभी मैं 3 मैच पहले की रादर आरआर वर्सेस राजस्थान रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मैच था। एबीडी स्ट्राइक पे थे। 19th ओवर स्मिथ ने दिया जयदेव उनाडकट को, जो कि बनता था जोफ्रा आर्चर का, और जयदेव उनाडकट ended giving 25 runs and eventually the game was finished, because ABD versus Jaydev Unadkat isn't a battle which everyone looks for. There is no parity between ABD and Jaydev Unadkat. Had it been Jofra Archer versus ABD, क्या पता एक different story, क्या पता Jofra Archer wicket ले लेते। And 19th over is bowled by a top bowler when you are defending. So वहां पे प्रॉब्ली स्मिथ से एक चूक हो गई। सो शफलिंग की जो आपने बात की, हाँ अननेसेसरी शफलिंग देखी है, डेफिनेटली अग्री। सो नाउ आई मूव टू नितेश जी, जो कि वापस आ गए हैं। हाँ नितेश जी। जी, मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे आज देखे जो रन आउट हुए मयंक अग्रवाल, और पूरन भी एक बार आउट होते हुए बचे हैं, और ग्लेन मैक्सवेल भी एक बार रन आउट होते बचे हैं, जो उन्होंने सेकंड रन लिया था और पहुंच नहीं पाए थे। अगर वो डायरेक्ट हिट लगती तो शायद वो भी रन आउट हो जाते। तो जब आप अच्छा खेल रहे हो, आज आप अच्छी बैटिंग कर रहे हो, तो ऐसा सुसाइडल सिंगल लेना या सुसाइडल डबल लेना जो नहीं है रन, पुअर रन जिसको हम कहते हैं, क्या जरूरी है ये? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जरूरी है। और आज मैं मयंक अग्रवाल की विकेट का जो एरर कहूंगा वो निकोलस पूरन की तरफ से ही था, बिकॉज मयंक अग्रवाल कंटिन्यूसली नो नो चिल्ला रहे थे, मगर उन्होंने देखा ही नहीं और भागते चले आए। और इवेंचुअली वो गेंद हाथ मयंक में ही थी अग्रवाल अश्विन के। वो मयंक अग्रवाल रन आउट हो गए। और मयंक अग्रवाल वाज अ बिग विकेट, मगर बिकॉज इन फॉर्म बैट्समैन थे, और
निकोलस पूरन आज दिखा कि कम से कम वो मयंक की जो विकेट है उसको पूरा करना चाह रहे हैं, और मयंक अग्रवाल वाज बिग विकेट। और ऐसी स्टेजेस पे जस्ट फॉर अ सिंगल आप ऐसा सुसाइडल कॉल नहीं कर सकते। आई एग्री विद यू, बिकॉज एक रन के लिए आप इतना बड़ा विकेट नहीं गंवाना चाहोगे, एंड दैट टू व्हेन यू नीड अ डेस्परेट विन। जब आपको यू आर इन अ मस्ट मस्ट विन सिचुएशन, आप यहाँ से हारोगे तो बाहर हो जाओगे, ये आपको पता है। उसके बाद ये सुसाइडल कॉल, एंड दैट टू वो सिंगल था भी नहीं, तो बिल्कुल। जजमेंट एरर भी है। दूसरा जो एक और रन जो पूरन रन आउट होते बचे, वो भी रन नहीं था, जो दौड़ गए थे फिर हाफ पेस तक, फिर वो लौटे, बट किस्मत थी उनके साथ, जो थ्रो नहीं लग पाया, ऋषभ पंत से डायरेक्ट हिट नहीं लग हाँ पाई, जो ये कहना चाहिए। हाँ। तो अब इस पर वही है, एक जी, रनिंग को छोड़ दें तो बाकी तो अच्छा रहा है पंजाब के लिए, बट वो रनिंग जो एस्पेक्ट है गेम का उसमें शायद थोड़ा सा, और ऐसा नहीं है कि रनिंग में इम्प्रूवमेंट चाहिए मेंटल एस्पेक्ट में, मेंटल जजमेंट में एस्पेक्ट कि जी, कहाँ पे रन बिल्कुल। है और कितना है। इट्स नॉट अबाउट फिटनेस की, फिटनेस नहीं है और रन नहीं ले पा रहे हैं, वो एरर नहीं है, एरर है मेंटल एस्पेक्ट से, जजमेंटल एरर है कि जज नहीं कर पा रहे कहाँ पे सिंगल है और कहाँ पे नहीं। जी, एक और क्वेश्चन है, बट मैं नेक्स्ट रोटेशन में आऊंगा, पूछूंगा अभी। ओके, सो अभी अभी कौन कौन अपना कमेंट देना चाहेगा? नागार्जुन जी। हाँ, मैं कहना चाहूंगा कि what I want to say is that again Kings 11 has proved today also none of the batters has finished the game. That is the weakest link proving throughout this season. And today also they failed. Somehow they managed to clinch the win and bag the 2 points. But still, none of the batters shown their responsibility to play. Maxwell has shown some intent for the belief or trust what the top management had in within him. I felt that he made a hook shot over the long on and made a four, and again he went to strike a six over Rabada and got out. These things Yeah, already we have seen in the IPL so far that uh, these matches can even can go from your hand. But Kings 11 has never learned from the mistakes. Somehow they have won the match today, but if they play like this, I don't think they will have a spot in the playoffs. This is the missing link, what I feel, and they should address this issue. What you agreed. have the Yeah, agreed, because see, उत्कर्ष जी, हाँ मेरा जी, भी सवाल इसी से रिलेटेड है, उसमें ऐड कर देता हूँ मैं, फिर आप दोनों का आंसर कीजिएगा। पंजाब की टीम में अगर देखा जाए तो सिर्फ ओपनर में राहुल और मयंक ही ऐसे हैं जो हिटिंग भी कर सकते हैं और पारी को 20 ओवर तक खींच के ले आ सकते हैं। बट मिडिल ऑर्डर में कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है, चाहे वो पूरन हो, चाहे गेल हो, चाहे मैक्सवेल हो। ये ऐसे बल्लेबाज नहीं है जो इनिंग को बिल्ड कर सके। इनका काम है सिर्फ बड़े शॉट्स लगाना, और वो कुछ कुछ बॉलों को डिफेंड कर सकते हैं, बट मैं उनको ये नहीं मानता कि इनिंग को बिल्ड कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। आई थिंक मिडिल ऑर्डर में एक बैट्समैन ऐसा भी होना चाहिए जो दोनों प्रकार की क्रिकेट खेल सकता हो, जरूरत में वो हिटिंग भी कर सकता हो और जरूरत में फिर इनिंग को आगे ले आ सकता हो। अग्रीड। पहले मैं नागार्जुन जी की बात बताता हूँ कि यस, दिस हैज बीन एन इशू, एंड दिस इज द इशू व्हाई KXIP वर फीडिंग द बॉटम ऑफ द टेबल। मतलब वो नीचे इसीलिए थे बिकॉज ओपनर्स तो अपना रोल बहुत बखूबी निभा रहे थे, एंड दैट्स व्हाई दे आर द टॉप 2 रन गेटर्स एज वेल। बट जो नीचे से सपोर्ट मिलना था वो नहीं मिल रहा था। मैक्सवेल wasn't firing, निकोलस पूरन was blowing hot and cold, so वो सपोर्ट नहीं मिल रहा था उनको बाकियों से। that was the reason and that was the issue. Today also, as you mentioned, I also mentioned it earlier, Maxwell, it was a very good platform for Maxwell to finish off the game and live up to the expectations of Kings 11 Punjab and shout out his critics. But he didn't do that. It was the last over of Rabada. Having said it was the last over of Rabada, you've hit a four on the previous delivery. Why are you going for that glorious shot? You could have easily went for a single
and come on the non-strikers end. चौका आ गया था, सिंगल के लिए आप जा सकते थे, आप छक्का मारने जा रहे हो. Maxwell, I'm being very blunt, Maxwell has an ego problem. Maxwell definitely has an ego problem. We've seen it against Yuzvendra Chahal, we have seen it against Kuldeep Yadav. He always knows that these spinners will attack him. In spite of that, he goes for that big hit, and you can check out the record of Maxwell against Kuldeep Yadav and Yuzvendra Chahal. So he And has some ego problem. Definitely today he's amongst runs, so thoda sa confidence unka high hua hoga, but he could have finished the game. For me, I would like to classes, add on something yeah, over here. yeah, yeah. I Please read go ahead. it, I think, in Times of India that Maxwell once said that in Australian team I do know what my role is, but when I come to play IPL every year there is something new role which teams are wanting me to perform in the IPL. Someone wants to finish. Someone wants me to finish the game. Someone wants me to perform as a bowler. Someone wants me to bat at number 4 or number 3. So he also mentioned this, that that's the reason he is not able to perform continuously. So definitely he has a ego problem. He is not a team player. He tries to be an individual who can score runs at times, can take wicket at times, but somewhere he lacks that team spirit which he shows for Australian team. He doesn't show that in Indian Premier League while he's playing IPL. See, if it is the statement of Glenn Maxwell, see, I haven't come across this statement, but if it is the statement of Glenn Maxwell, see, he tries to perform different roles. But in this season, if you've closely watched Maxwell was given a number. He came on that particular number at that particular number, and that is, I think, 1, 2, 3, number four before Chris number Gale. 5, 5, Yeah, I think. before Chris. Okay, 5. So so if it's not there, then it's a communication flaw between Maxwell and the KXIP team management. And Maxwell being a senior player, he also has the responsibility for the team, so he can also go up to Anil Kumble, the head coach, or skipper KL Rahul, and say, hey dude, I have a certain job, I have a certain role, please define me a role, I'll play accordingly. He can also do that because he's not a newcomer into the side, a newcomer to international cricket. He's an experienced campaigner. So this is where I think Maxwell lacks. He doesn't like to take responsibility. Is what I Yeah, feel. And that was just an excuse which he was trying to give. That was just an yes, excuse which he was trying to give for his poor performance. I completely agree with that. If you're done with, if everyone is done with question, I do have one more question to put in front of you all. एक एक नीतीश जी का क्वेश्चन था, मुझे आंसर करना Sure, था. sure, 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 नीतीश जी, sure, sure. आपका एक क्वेश्चन कौन सा था? मैं सॉरी वो भूल गया. जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि मिडिल ऑर्डर में मतलब ओपनर के बाद कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं है जो इनिंग को बिल्ड भी कर सके हाँ, और जरूरत पड़ने पर याद हिटिंग आया, भी कर याद सके. आया. See, I'll actually beg to differ from you because Nicholas Puran is a 360-degree player. वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि वी में खेलते हैं, सीधे बैट से खेलते हैं, और वो इनिंग्स बिल्ड कर सकते हैं. निकोलस, ही हैज बीन ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड दिस सीजन, वो बात अलग है. बट अगर आप उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखें, लास्ट, अगर आपने फॉलो किया हो लास्ट 1 ईयर, 1.5 ईयर से, तो बहुत इवॉल्व हुए हैं निकोलस पूरन, और बहुत ज्यादा मेच्योरिटी आई है उनके गेम में. सो निकोलस पूरन इज समवन जिन पे मैं बेट कर सकता हूं कि हाँ, ये इनिंग्स बिल्ड कर लेगा. ऑल्दो कि उनका सीजन ये वाला बहुत उतना मिक्स परफॉर्मेंसेस रही हैं, मगर उन पे मैं तब भी थोड़ा सा भरोसा कर लूंगा कि वो बिल्ड कर लेंगे. बट आफ्टर दैट आई एम टोटली अग्रीड विद यू कि मैक्सवेल से मैं उम्मीद नहीं करूंगा कि मैक्सवेल इनिंग्स बिल्ड करे. एंड इट्स वेरी शॉकिंग कि मैक्सवेल ने यूएई में परफॉर्म नहीं किया, बिकॉज लास्ट टाइम 2014 में जब एक लेग हुआ था, आधा लेग यूएई में आईपीएल का, so मैक्सवेल was actually clobbering the bowlers. Maxwell was in his top form, और 5 के 5 मैच इसीलिए पंजाब जीती भी थी. Mm. जी.
Okay. So now, Rohan, you can go ahead. So I would like to ask everyone, before IPL, everyone was running against Shikhar Dhawan that he doesn't deserve a place in T20. He is the Yeah. most poor performer opener. Now he has scored two हाँ. consecutive hundreds. कंसीडरिंग और Wills, इसमें एक और चीज ऐड करूंगा. सब स्ट्राइक रेट की hmm, बात कर रहे थे. दिस टाइम अराउंड ही स्ट्राइकिंग एट द स्ट्राइक रेट ऑफ 170. मतलब आखिरी के 200 तो इट इज कम एट अ हेल्दी स्ट्राइक रेट ऑफ 170 80. yeah. So moving forward, the question will be that Mayank Agarwal is performing equally well as Shikhar Dhawan. And when uh, some people, some known friends of mine are saying that Shikhar Dhawan hasn't performed internationally, but Mayank Agarwal hasn't got a chance in T20. So Shikhar Dhawan doesn't deserves a place in the T20 side, and Mayank Agarwal should get a chance on the basis of the performance which he has shown in IPL. So what's your take on this? सी अभी Uh, वर्ल्ड कप अगर इस just to बार होता. just to just हाँ. to interpret, हम्म. I want to add what Rogan is saying. In the हम्म. same thing, IPL is almost going to complete, and at this time, what will be your choices for everyone in the panel? I'm asking. If हम्म. World T20 is coming, who will be the openers for Indian team? अच्छा. So I means as far as now, I'll still bet on Rohit Sharma and KL Rahul. और मैं वर्ल्ड कप की बात नहीं कर रहा हूँ. I'm telling after this IPL for the T20s, because अगर वर्ल्ड कप होता इस साल वर्ल्ड कप होता तो अभी भी मैं रोहित शर्मा और केएल राहुल पे ही दांव लगाता, और तीसरे ओपनर कंसीडरिंग आईपीएल फॉर्म मेरे शिखर धवन हो जाते. एक लेफ्ट हैंडर को मैं अपने साथ ले जाना चाहता. बट आईपीएल सॉरी T20 वर्ल्ड कप अब अगले साल है. अगले साल है मतलब एक और आईपीएल उससे पहले हमें मिलेगा. थोड़े बहुत T20 गेम्स मिलेंगे. सो वहां से और बेटर अंदाजा होगा कि कौन रोहित शर्मा के साथ ओपन करेगा. आई थिंक केएल राहुल अभी रेस में आगे हैं, और मयंक अग्रवाल और शिखर धवन इक्वली उनके पीछे हैं. इक्वली, मैं ये नहीं कहूंगा सेकंड पे मयंक है, थर्ड पे शिखर है. आई से इक्वली दोनों हैं, बिकॉज जो परफॉर्मेंसेज इस बार शिखर धवन की भी रही हैं बहुत अच्छी रही हैं. एक हेल्दी स्ट्राइक रेट पे, जैसे मैंने कहा, ये स्कोर्ड रन्स, एंड दैट वाज द मेजर इशू फॉर शिखर धवन इन द प्रीवियस सीजंस और इन द T20 गेम्स, जहाँ पे he was not able to accelerate. But this time around he has maintained that strike rate right from the first ball to the last ball. और आखिरी के दो मैचों में अगर आप देखें, he has been not out. So he has been not out. It means that he's not throwing away his wicket, which he used to in the previous seasons. मतलब अगर 50 हो गया 60 हो गया तो he would play a rash shot. But this time around he has been not out. He's been coming not out. So it's a very good sign for Indian cricket team, and a headache, a very good headache for the selectors as well. So उन्होंने बाकी पैनल बाकी गेस्ट की भी राय मांगी है. So नागार्जुन जी, आपका क्या कहना है? In my view, that you rightly said, another season of IPL will be there, but I feel KL Rahul and Rohit Sharma will be the my opening pair for Indian team. But it is, I am not underestimating the ability of Shikhar Dhawan. Even though he scored two consecutive hundreds in this match, in the past two matches. Before that, also he carried the bat through the innings. In that innings was the slowest innings, one of the slowest innings in the history of IPL. I think it is in the top five. I don't remember the exact figures. Last innings. No, not last innings. Before that, I think Oh, third where or he made fourth. 67 against 67 out Mumbai of Indians, 52 or against Mumbai 53 Indians. balls. 53 or 54 balls. He carried the bat through. That was the slowest innings in the IPL history, which listed in the top five. So I feel KL Rahul deserves a place to be a opener in Indian team. What it is my personal view, and Yeah. it is always a advantage to have a right and left combination. But
In Indians, as you rightly said, there is a headache for selectors, but the amount of class case KL Rahul has shown, he thoroughly deserves a place as an opener in Indian team, and he should be given the chance at least in the T20, because ODI is a different thing, and there definitely the one will plays a role. And in T20, I feel that KL should given a role for the enormous performance he has given for the last 2 3 years. So in my view, he should be given. And I don't feel right now. I don't feel place for Sigadon. Surely he will be in the squad, but I don't. He will be not. He will not be in my playing 11. This is my view, and I'm eagerly waiting for the comments from the other panel members. Yeah, agreed. मैंने भी यही कहा कि यार केएल राहुल इज द फ्रंट रनर एज ऑफ नाउ. सो नाउ नितेश जी. जी बिल्कुल, मैं भी आप दोनों से एग्री करता हूं, बट इसमें एक बात ऐड करूंगा कि अगला जो T20 वर्ल्ड कप जो शेड्यूल्ड है वो इंडिया में ही होना है, और जो आईपीएल भी है वो तो अगर सब सही रहा तो आई थिंक अप्रैल में इंडिया में ही होगा. तो वहां किसका फॉर्म बेटर है वो भी जरूर काउंट होगा उस समय. आज की डेट में अगर बात की जाए तो केएल राहुल और रोहित शर्मा ही ओपनर होंगे फ्रंट लाइन पर. उस समय फिर देखना होगा कि कौन वो फॉर्म को कैरी कर पाता है. और दूसरी बात, शिखर धवन के साथ एक एडवांटेज ये जरूर जाता है कि वो लेफ्ट हैंडर है, प्लस आईसीसी टूर्नामेंट्स में उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, मतलब आईसीसी मैचेस में. तो खैर ओपनिंग के लिए तो मेरा भी वही व्यू है, बट शिखर धवन भी टीम में जरूर होने चाहिए मुझे ये लगता है, और क्योंकि आईसीसी में उनका रिकॉर्ड अच्छा है आईसीसी टूर्नामेंट्स में, और बड़े मैच एक पॉइंट में कहा जाए मैच विनर है वो टीम इंडिया के. हाँ अग्रीड. मतलब वाइट बॉल क्रिकेट में तो रन अवे मैच विनर. बिल्कुल बिल्कुल. स्पेशली इन ओडीआई क्रिकेट उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो इट हैज बीन ओडीआई में ज्यादा है. बिल्कुल. या प्रबोध जी, व्हाट्स योर टेक? इसमें मैं तो आप सभी से एग्री कर रहा हूँ कि राहुल और रोहित शर्मा सबसे आगे चल रहे हैं. रोहित शर्मा का जनरली बहुत कंसिस्टेंट नहीं रहता है आईपीएल में, जो उनका क्लास है या लेवल है उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस नहीं रहता है. इज ऑल वर्ल्ड मैन है, टॉप 2 3 बैट्समैन में आते हैं रोहित शर्मा का जो क्लास है, बट आईपीएल में वो लेवल जनरली शो नहीं होता है. बट ही इज ऑलवेज मैच विनर अपार्ट फ्रॉम आईपीएल. उनके व्हाइट बॉल गेम में बहुत शानदार रिकॉर्ड्स हैं और ही इज अ जेन्युइन मैच विनर इन एनी टाइम. तो रोहित शर्मा तो हमेशा टीम में पोजीशन एक डिजर्व करते हैं, और डेफिनेटली केएल राहुल जो पिछले 2 3 साल से परफॉर्मेंस दे रहे हैं ही ऑल्सो डिजर्व. बट ये है कि जो उनका रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूट पे जो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन आपने बोला कि मयंक और शिखर में हमेशा रहेगा. मयंक इज अ यंगस्टर और कंटिन्यूस काफी अच्छे रन कर रहे हैं, इवन दो टेस्ट में भी बहुत अच्छा किया है. और शिखर तो जैसा नीतीश भाई ने बोला कि आईसीसी के वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस रहे, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी एंड द ओडीआई वर्ल्ड कप्स में. तो एक ये बहुत हेल्दी मैसेज भी है सभी के लिए और एक बहुत अच्छी खबर भी है क्रिकेट लवर्स के लिए कि हमारे पास सब इस लेवल के इतने अच्छे बेंच स्ट्रेंथ बैठी हुई है कि हम वर्ल्ड की किसी टीम को एनी टाइम वी कैन गिव अ टफ कॉल. ओके, अब we are running out of time, so I have a last point to discuss, and after that I'll wrap up the show. And it's regarding the previous match between Chennai Super Kings and Rajasthan Royals, where MS Dhoni in the post-match conference said that I haven't given chances to youngsters as I didn't see spark in them. I didn't see, मैं एक बार फिर से इसे highlight कर देता हूँ. I did not see spark in the youngsters, young players. यंग प्लेयर्स मतलब आप जान ही रहे हैं कौन है, ऋतुराज गायकवाड़ एंड एन जगदीशन, नारायण जगदीशन. अब इसमें मेरे 2 पॉइंट्स हैं, मैं आप सभी की राय लूंगा. ऋतुराज गायकवाड़, he was coming from COVID-19 and then he was playing in the middle order, which is not his usual batting position. He's an opener. He has scored tons and tons of runs for India A and in the domestic circuit, because of which he has been selected for CSK, and that is at the opening position, not in the middle order. Number one. Number two, Narayan Jagdishan played only one game, but
again. So did MS Dhoni see spark in Piyush Chawla? Did MS Dhoni see spark in Kedar Jadhav? Did MS Dhoni see spark in Shane Watson? So मेरे हिसाब से एक गलत डिसीजन था. मैं आप सभी की भी राय जानना चाहूंगा. आज पाजी है नहीं तो मैं पाजी से ये क्वेश्चन पुट अप करता. होपफुली मैं कल इसको पुट अप करूंगा. सो स्टार्टिंग विद नागार्जुन. Yeah, it's a very valid point. सब लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं धोनी के कैप्टनसी में. It is यंगस्टर्स को तो चांस देना ही चाहिए था. There was no इवन नटराजन जगदीशन ने काफी इंटेंट दिखाया था वो एक मैच में जो 30+ जो बनाया था. वो उनको तो चांस देना ही चाहिए था. बट अनफॉर्चुनेटली सबको समझ में नहीं आ रहा था कि पता नहीं केदार जाधव इवन केदार जाधव रोल वाज नॉट known to everyone, and even I am saying some harsh words on it. Even Kedar don't know what to do on his role because he comes late and he didn't bowl, and fielding also very normal fielding. So even I remember a player Baba Prajit who benched more than 3 seasons for CSK and 2 seasons for Rising Pune Giants. I think most benched player in IPL session who is from Tamil Nadu, and Baba he Pradeep didn't get. from Tamil Nadu. He plays from Tamil Nadu and captain of Tamil Nadu as well. A former captain of Tamil Nadu state Yes, team. he performed even well in TNPL also, Tamil Nadu Premier League, and even many players recruited CSK this season also. When Sai Kishore was there, there was no chance given to him also, and there was very unawkward and very weird selections of team. Even Imran Tahir was whole season he was benched. Not even a single chance was given to him, and he was a purple cap winner last year. Don't forget that. And matches were in UAE and bigger grounds. How big impact could have been given, and they made their most of the team for playing in Chennai pitches. That is a different story. They took three leggies, Piyush and Karan Sharma, He's two Tahir, left arm, Sai Kishore and Ravindra and Jadeja again. Ravindra Jadeja. Yes, but the pitches, the shift of matches to IPL backfired them. But every team has to change. Even Mumbai has a pace battery to in order to seeing the pitches of Wankhede. But it suited them, and they have a flexible lineup in their squad also and the team also. So Rohit have the capability to this thing. But somehow Chennai even we were discussing somewhere in some show that with Nitish ji also that Chennai lagging that earlier you remember that when Sachin was Mumbai Indians captain and he transformed to Rohit Sharma, there was no face showing in Chennai Super Kings. After Dhoni, who will be the leading captain, or who will be the player to watch out from Chennai? That is a big question coming ahead. And See, that is most the of problem. That is the problem. They haven't groomed a future captain. See, that is the problem. कि अगर आज if MS Dhoni wants to leave captaincy and just say bye bye to the IPL, who will lead CSK? That's a big question in front of the franchisee. Who will lead them? Because yes, see, as definitely, a captain is also the brand of a team. Don't forget that. yes, Captain is a yes, brand, yes. and MS Dhoni is a very big brand. Chennai is making a huge sum of money from MS Dhoni. See, it's a very big brand. So at the same time, you need to understand who will lead them and who will be that face of Chennai Super Kings, brand face. Yes. Yeah, agree. They have some problems. Even Raina was not available for the entire tournament. Even they left out Harbhajan Singh opt out the season. So they faced some problem, but they couldn't be able to identify the replacement for those players. The experienced legs. That was the biggest problem. And even I feel even CSK management were thinking that Raina may lead after Dhoni. That may be in their mind. But they are not grooming any new youngsters or face of this thing from Tamil Nadu, or no player they have groomed, or no youngsters So, has been groomed. so now to cutting it short, I'm sorry as I'm running out of time. So do you agree Yes, with this yes, statement? Do you agree or yes. no? I agree. I agree fully. There was You not agree with enough chances given.
I You feel agree that with there was. I agree the view that there is no spark in yes. Watson and even Jaddu has underperformed and Kedar has underperformed. Piyush Chawla has underperformed. That was Yeah. there not been sufficient chance given to the youngster. That is my point. Okay. Agreed. And just to add on before going to Rohan, that Jadeja was underutilized just because in his batting, he was sent lower down the order, but he actually scored good runs, quick runs for CSK. I don't know why he was sent lower down the order. Even DJ Bravo was sent uh, really down the order. And having said that, Kedar Jadhav was also sent. See, if he's an uh, outright batsman, if he's an front line batsman, he should have come when there is a collapse, not an all rounder like Jadeja. You should first send your frontline batter to bat, and then you may send your all rounders. So there are a lot of questions for CSK as they are the bottom feeders in this season. So the questions are unending. We can have 2.5, 3 hours debate on that, but as we are short of time, we'll quickly move to Rohan. Rohan, what's your take? I would like to again have the question, please. The question was that MSD yesterday in the post-match presentation made a statement that I didn't back youngsters because I didn't see any spark in the youngsters. Did not see any spark. So my question is that with all due respect to MS and the stature which he has, did he see spark in Piyush Chawla? Did he see spark in Kedar Jadhav? Uh, Dhoni has been trolled badly on over the internet, as we have seen that earlier when he was he was not having enough confidence in his seniors, and that time he didn't. Yo Mahesh, I'm really sorry, Rohan, for interrupting. Yo Mahesh, Paji was busy and was somewhere outside today, so he wasn't able to join, but he'll surely join tomorrow. And for that matter, if you want to join us live in the discussion, I've posted the link in the live chat window. You can click on the link and join us. Yes, Rohan, continue. So earlier he wasn't having enough confidence in his seniors. Now he's not having enough confidence in his juniors. I believe the only person he has confidence in is only himself. And now that too has literally going against his will, and he is unable to perform. He is unable to perform with his team. He is unable to perform with his players. He himself is not able to bat. So the Dhoni time has flown away, and there is no comeback now. And I'm very much happy that he finally announced his retirement, because every time we were in an international series, commentators were just talking about Dhoni, that if Dhoni would have been at this position, what would he have done? Again and again the same question, again there is no answer to it. And as you said that we can continue this debate to n number of hours. So there is no Yeah. point of discussing this. That he is gone. He is no more part of our Indian cricket team or our Indian cricket circle. Now is the time that he should, from next season, he should sit on the bench, and he should run the Side game players. sitting outside. Yeah. Yeah. Nitesh ji. Then then he can look around India. He can go around India and scout players for CSK, and then he'll Yeah. know that what Definitely. caliber does our youngsters have. Yes, India can make use of his cricketing mind, cricketing brain. Agreed. But then also there comes a question: Will he do? Will he actually, after retiring from all forms of cricket, will he actually be involved in cricket? That's also a particular different question. We'll discuss it someday. But today, as we are short of time, so I'll move to Nitesh ji. जी मैं जो कहने जा रहा हूँ धोनी के लिए फुल रिस्पेक्ट है ये नहीं है कि जो मैं कहने जा रहा हूँ उस वजह से धोनी के लिए रिस्पेक्ट कम हो जाएगा बट धोनी ने जो कहा है वो शायद अपने ऊपर एक सेल्फ गोल कर लिया अगर ऐसा कहा है उन्होंने तो मैंने तो इसको नहीं पढ़ा था
बट आपसे मैं सुन रहा हूँ तो, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स का जो भी सिलेक्शन हुआ होगा टीम का, धोनी के बिना जानकारी के नहीं हुआ होगा। और सी धोनी, नितेश जी, पहली बात तो ये टॉक ऑफ द टाउन थी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया। दूसरी चीज, जी जी एक चीज मैं सब व्यूअर्स को ही बता दूं क्लियरली, सीएसके इज धोनी, धोनी इज सीएसके, जी बिल्कुल, चेन्नई इज धोनी, धोनी इज चेन्नई। आप अगर समझ रहे हो स्टीफन फ्लेमिंग इज देयर एज द हेड कोच, तो उनका कोई रोल नहीं है उतना ज्यादा। रबर स्टैम्प क्या है वो आपको सिर्फ। लगता है स्टीफन फ्लेमिंग बताते होंगे धोनी आज ये खेलेगा, धोनी आज वो? सी, इफ यू हैव धोनी एमएसडी in your camp, then it's simply clear that CSK is Dhoni, Dhoni is CSK. जी, It's too clear. मैं वही कह रहा हूँ कि धोनी ही सेलेक्ट किए होंगे उन प्लेयर्स को, फिर धोनी उनको क्यों बैक नहीं कर रहे हैं? मतलब वो है कि जो उन्हें हार मिली है अभी, जो सीएसके का जो हाल हुआ है, वो यहाँ से जिम्मेदारी लेनी चाहिए, खुद उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो भी यंग गन्स है, उनको भी फ्यूचर में इंडिया में खेलते हुए देख सकते हैं हम। उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए, ना कि इस तरह का Yes, स्टेटमेंट आकर देना चाहिए। yes. पहली बात, बहुत इससे रिलेट में बहुत दो तीन पॉइंट में जल्दी से मैं बोल देता हूँ, क्योंकि शायद समय हाँ आपके हाँ पास भी नहीं है। हाँ ये हाँ वही धोनी है जो 2008 में जब हम ऑस्ट्रेलिया में ट्राई सीरीज में गए थे, तो वहां से सौरभ गांगुली और राहुल द्रविड़ को बाहर किया था उन्होंने टीम से, और उन्होंने कहा था कि यहाँ पर बड़े ग्राउंड से और हमको अच्छी फील्डिंग यूनिट चाहिए और यंग गन्स की आवश्यकता है। और ये वही धोनी है फिर से, ये 2012 में भी ऑस्ट्रेलिया में ही ट्राई सीरीज में फिर जब उन्होंने रोटेशन पॉलिसी अपनाई थी और अपना डिसीजन दिया था वहां पर। तो आज यही धोनी अपने आप को कैसा लग कर है। और अगर मैं एक चीज और ले लूं, एम एस धोनी पिक्चर का अगर एक पार्ट में उठाता हूँ, एक स्टेटमेंट दी थी उन्होंने, फोन में बात करते हुए एक सीन दिखाता है कि अगर आप मुझे मेरी टीम नहीं दे सकते तो मैं कैप्टनसी छोड़ देता हूं करके। तो आज फिर ये बात क्यों धोनी कह रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा है। मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता इस बात से। बिल्कुल ये स्टेटमेंट धोनी ऊपर शूट नहीं करती। और विगत कुछ दिनों से ये भी देखा गया है कि धोनी थोड़ा बौखला रहे हैं। जो एक कैप्टन कूल की उनकी छवि बनी हुई है, जो एक कूल माइंडेड की छवि बनी हुई है, वो थोड़ा सा तोड़ रहे हैं उसको, एम्पायरों से बहस कर रहे हैं। ये धोनी का जो कैरियर का एंड स्टेज है उस पर ये चीज उनको उनका मतलब प्रसिद्धि को और बढ़ा नहीं रहा है, जबकि रिस्पेक्ट कम हो रहा है। ऐसा अगर ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी धोनी धोनी है, वर्ल्ड के बेस्ट कैप्टन रह चुके हैं और आगे भी रहेंगे, आगे भी उनको वही सम्मान रहेगा। पर यंग प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाने की आवश्यकता है उनको। मैं तो यही कहूंगा कि अगले 5 मैचों में वो प्लेयर को पूरा मौका देना चाहिए। अब जो प्लेयर्स परफॉर्म नहीं किए उनको बेंच में बैठाओ, और जो जो प्लेयर्स है, ऋतुराज गायकवाड़ हो चाहे जगदीशन हो, उनको जितने मैचेस बचे सभी मैचों में मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल, बस इतना ही कहूंगा मैं। they should aim for building the team for the next year's tournament. यो महेश भी हमसे एग्री कर रहे हैं, वो कह रहे हैं every player has a certain age limit. Sachin, the god of cricket, once had to retire because he was struggling. No one is bigger than the game. Agreed, no one is bigger than the game. One day, Rohit and Virat, everyone will retire. Baton has to be passed. Yes, definitely, Baton has to be passed. और एमएसडी से ये स्टेटमेंट इसलिए भी इतना अनयूजुअल लग रहा है बिकॉज एमएसडी इज अ काइंड ऑफ प्लेयर हु जो अपने टीम पे बोझ बनना नहीं चाहते। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट की कैप्टनसी भी 90 टेस्ट खेले थे, कायदे से 10 टेस्ट आराम से खेल सकते थे, बट ही went for the opposite and he retired in the middle of the Australian series. So इसलिए भी थोड़ा सा, because MSD is a player who like young players and who likes to groom young players, क्योंकि उनको अपने साथ लेके चलना पसंद करते हैं एमएस धोनी, इसलिए भी उनसे ये स्टेटमेंट मुझे बहुत एक्सपेक्टेड नहीं था। चलिए, मूविंग टू आवर लास्ट गेस्ट, प्रबोध जी। उत्कर्ष जी, मेरा इसमें ये था कि एक तो ये स्टेटमेंट तो डेफिनेटली गलत है। आई लव एंड रिस्पेक्ट एमएस, बट मैंने उनको काफी रिव्यू किया, सारे मैच देखता हूँ उनके, बट ये स्टेटमेंट वाज नॉट दैट कंफर्टेबल जो उनके लेवल से एटलीस्ट एमएस से हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, कि काफी सपोर्टिव कैप्टन रहे हैं और काफी फेथ रखते हैं अक्सर अपने खिलाड़ियों पे। और सबसे बड़ा इशू है कि उनके बाद कैप्टन कौन, ये तो इशू आ ही रहा है सीएसके का।
बट सबसे बड़ा इशू तो मुझे ये दिख रहा है कि अगर इस साल या 21 या 22 में सीएसके में प्लेयर कौन होगा, आई एम अनेबल टू इमेजिन कि वहां पे हमें प्लेयर ही नहीं दिख रहे हैं। जो अभी की लाइनअप है उसमें से कोई भी शायद रिटेन ना हो पाएगा 2021 के बाद में। अगर एमएस छोड़ते हैं तो 25 में से कम 15 प्लेयर बाहर जाते दिख रहे हैं और बाकी 10 में खेलते कभी दिखे नहीं। तो उस सीन में अग्रीड क्या होगा? प्रबोध जी, मैंने कल ये पॉइंट उठाया था कि वेरी मतलब कि वेरी ट्रस्टेड सोर्सेज हैव कंफर्म्ड कि नहीं होगा मेगा ऑक्शन हाँ, आईपीएल मेगा ऑप्शन 2021 नहीं से हो रहा पहले। एंड या अगर मेगा ऑक्शन नहीं हो रहा है, जो कि नहीं होगा इस साल, सो आई एम रियली अफ्रेड कि सीएसके का ये सीजन तो खराब रहा है, अगला सीजन वर्स ना हो जाए। आई एम रियली अफ्रेड कि इस सीजन में, अगले सीजन में इन्हीं ग्रुप ऑफ प्लेयर्स के साथ कैसे कंटिन्यू करेगी सीएसके। आई रियली डोंट सी इनके साथ अ गुड कैसे रन फ्यूचर। करेगी, देन उसके बाद 22 में क्या होगा वो तो और भी अनसर्टेन हो जाएगा। यानी अभी तो कम से कम इनके पास नाम तो है खेलने के। 22 में तो मुझे नाम भी नहीं दिख रहे इनके पास खेलने वाले। तो मेगा ऑक्शन तब तो they'll go for huge buys in the या मेगा ऑक्शन। तो वहां पे या वो मेगा। डेफिनेटली। यो महेश कह रहे हैं कि सौरव गांगुली was the one who really made players like भज्जी, जहीर, सहवाग, यूवी and even for that case एमएस। डेफिनेटली बिल्कुल 2011 की अगर टीम देखें तो उसमें से आधी टीम सौरव गांगुली की है। इसमें मैं अगर आशीष नेहरा का भी नाम ऐड कर दूं तो आशीष नेहरा भी उन्हीं के अंडर में खेले और उन्हीं के प्रोडक्ट थे, बिल्कुल। एमएस एमएस को भी उन्होंने ही बनाया। डेफिनेटली। So on this very note, I like to wrap up the session. Thanks a lot, Nagarjan या ji, Rohan, Nitesh ji, Prabodh ji, and Yo Mahesh as well for joining. Thanks a lot everyone for joining in. And today Paji couldn't join because he was busy somewhere. So tomorrow definitely, I got a text. He'll definitely join from tomorrow. And so tune in every day at 11:45 p.m. for. See, I have one thing more. What you, Mahesh? Take Finch or Cummins. They'll anyways get dropped and go for बिलिंग्स, Billings सैम again. बिलिंग्स। कलिंग्स again। जी। Sam Billings is a good player, but yeah. Just from my curiosity, I would like to ask if the person commenting below is real Yo Mahesh or not. If he can confirm that is he the real Yo Mahesh who has played or So, who has yeah, professional yeah. cricketer. So if he can confirm, या yeah, who has played यो professional महेश cricket for साउथ India. इंडिया, या वाई यो महेश। So So, I would like to so know Mr. Yo from Mahesh. him if he can type. So And Mr. if Yo he Mahesh, is the the one, owners of so why don't he join us? yeah. So Mr. Yo Mahesh, the onus of confirming your identity now rests upon you. Please let us know. We are waiting for you now. So we are waiting for your comment to come in, and then we'll wrap up the session. But thanks a lot everyone for joining. Thanks a lot, Yo Mahesh. I'll wait for your या comment. Tune in every day, guys, at 11:45 p.m. We conduct this interactive post-match analysis session every day at 11:45, where you also have a chance to directly interact with Mr. Monty Panesar and ask your questions directly live in the video. So या it's a very good opportunity. Definitely connect. And GBS Go Beyond Sports is a platform for the people, and that's why we do these sessions where you can directly interact. So we give people a chance to interact. I haven't still received any comment from Yo Mahesh, but I think he must be typing. So I'll give just an extra minute to it before wrapping up the session. And एक बात, as अ, हाँ, जो डिस्कशन हो रहा है धोनी को लेकर, एक और मैं आपको बात बताता हूँ कि शायद ये वाली बात को ज्यादा लोग see, महसूस नहीं करते। I've got a comment. I've got a comment. I've been part of Delhi Daredevils in IPL. So, Mr. Mahesh, if you've been a professional cricketer, and as we were saying that you are a cricketer, why don't you join us in these live sessions? It will be very exciting to know your point of views as well every day at 11:45. Please, if you can, it's a request on my part. Please, if you can join us every day at 11:45, not every day. If you don't have time every day, please join us whenever you
come and comment. Instead of commenting, join us. It will be very interesting and very exciting to know your point of view. Please, if you have the time, please, if you can join now. I have the link posted in the live chat box. I'll post it again. Wait. It will be pleasure discussing cricket with you. See, I'm posting it again. See, I've posted it again. You can join us. I'll wait for give extra 5 minutes to the session if you join. It's really good to know that you. Okay. So today he'll not join. He'll try later for joining. Thanks a lot for confirming, Mr. Mahesh. And again, thanks a lot to all the viewers and all the fans who've joined us in the live session. Thanks a lot, everyone, for joining us. Please stay tuned, and every day at 11:45 p.m. just put on your alarms that every day at 11:45 p.m. we are live, and we'll be doing this from tomorrow. Paji will also be there. Today he was not there because he was a bit busy, but from tomorrow he'll be there. Also, Shirish Natkarni sir will also be there from tomorrow. So thanks a lot, viewers. It's goodbye from my side. Good night. Take care. Bye. Good night.